સંતરામપુર નગરમાં રમજાન ઈદના પવિત્ર તહેવાર પ્રસંગે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ભારે ઉત્સાહ અને આનંદ સાથે ઈદગાહ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી। સંતરામપુર નગરમાં રમજાન ઈદના પવિત્ર તહેવાર પ્રસંગે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ભારે ઉત્સાહ અને આનંદ સાથે ઈદગાહ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વહેલી સવારથી જ નગરના મુસ્લિમ ભાઈઓ મોટી સંખ્યામાં સંતરામપુર ઈદગાહ ખાતે એકત્રિત થયા હતા। આ પ્રસંગે સંતરામપુર જુમ્મા મસ્જિદના પેશ ઇમામ હઝરત ગુલામે યાસીન દ્વારા ઈદના મહત્વ પર ચંદ તકરીર કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તમામ લોકોએ એક સાથે 2 રકાત નમાઝ ઈદગાહ ખાતે અદા કરી હતી। નમાઝ બાદ પેશ ઇમામ દ્વારા અલ્લાહ તાહલા પાસે દેશમાં અમન અને શાંતિ રહે તેમજ સૌ લોકો પરસ્પર ભાઈચારાની રહે તેવી દિલથી દુઆ માંગવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ મુસ્લિમ સમાજના ઈદગાહ ખાતે હાજર લોકોએ એકબીજાને ગળે મળી હાથ મિલાવી રમજાન ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી, જે ભાઈચારાનો સુંદર સંદેશ આપતો જોવા મળ્યો હતો। રમજાન ઈદ નિમિત્તે સંતરામપુર તેમજ મહીસાગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા યોગ્ય બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। આ બદલ મુસ્લિમ સમાજે પોલીસ વિભાગ અને સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો તેમજ તેમને પણ ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી હતી। હું છું સલમાન મોરાવાળા સંતરામપુરમાંથી। આપણે વાત કરીએ આજે સંતરામપુર શહેરની તો સંતરામપુર નગરમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ઈદગાહ ખાતે ઈદ ઉલ ફિત્ર ઈદની નમાજ પઢીને ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં આપણે સંતરામપુર જુમ્મા મસ્જિદના પેશ ઇમામ ગુલામ યાસીન જી આપણી સાથે છે, તો સીધી આપણે આ બાબતે વધુ એમની સાથે વાત કરીશું। જી હજરત। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर संतरामपुर की ईदगाह के अंदर तमाम सुन्नियों ने मिलकर आराम और सुकून के साथ ईद की नमाज अदा फरमाई है और आपस में एक दूसरों ने मिलकर मोहब्बत का सबूत भी पेश किया है और साथ में हमारे इस ईद की नमाज की अदायगी के अंदर सरकार ने और पुलिस वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। उनका हम तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी मेरा नाम खादिम गुलाम यासीन रदवी, पेश इमाम जुम्मा मस्जिद संतरामपुर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक तमाम इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के मानने वालों को अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्हम्दुलिल्लाह संतरामपुर महीसागर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज वक्त पर अदा की गई और यहाँ के लोगों ने बड़ी शांति के साथ नमाज अदा की और इसमें गुजरात सरकार का भी और पुलिस प्रशासन का भी बहुत इसमें साथ रहा। इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तमाम हिंदुस्तान के रहवासी को अल्लाह पाक तमाम तर आफात और बलियात से महफूज फरमाए, सबको प्यार मोहब्बत के साथ अमन और सुकून के साथ भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जी सुनाम आप। मेरा नाम सलमान अहमद अत्तारी है, पेश इमाम फैज़ान मदीना संतरामपुर। चलिए। كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا واياكم بسنته وحيانا واياكم على محبتي وتوفنا واياكم على ملتي وحشرنا واياكم في زمرتي وسقانا واياكم في شربته شرابا هنيئا مريئا سائغا لا نسمع بعده ابدا وادخلنا واياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورأفته وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى عدد أصحاب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى جميع القرآن أمير المؤمنين أبي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى عبد الله الغالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن الغالب كرم الله رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وبنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من لدنا سيدنا أبي عمارة